स्वागत है सभी का मैं इस नए वीडियो में। ये हमारा प्रीलिम्स का जो वन शॉट चल रहा है 2025 के लिए, उसका 18th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्वीडन जॉइंस आर्टेमिस अकॉर्ड। स्वीडन बिकम 38 सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड, नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स फॉर पीसफुल सिविल स्पेसेस एक्सप्लोरेशन लेड बाय यूएस बेस्ड ऑन आउटर स्पेस ट्रीटी प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरऑपरेबिलिटी सेफ्टी। इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है। Then comes Agni Prime missile test successful. India successfully flight tested Agni Prime, और न्यू जेन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि जिसका रेंज 1000 to 2000 किलोमीटर का रेंज है। इट इज़ कैनिस्टराइज। कैनिस्टराइज क्या होता है? जैसे अभी आप लोग S-400 देखे हो ना, जो अभी वॉर में यूज़ किया गया था। कैनिस्टर में पैक रहता है, यहाँ से मिसाइल निकलता है, फिर यहाँ से ये जाके हिट करता है टारगेट को। यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट, फीचर्स हाई एक्यूरेसी, मिनिमल लॉन्च प्रिपरेशन। देन अपना वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? तो देखिए ग्लोबल नॉन प्रॉफिट जो कि 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, इसको डेडिकेटेड टू इंप्रूविंग ग्लोबल सैनिटेशन। की इनिशिएटिव्स इंक्लूड वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कि 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अभी ये यूएन रिकॉग्नाइज हो गया है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट। द वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हैज़ एन यूएन इकोजॉक कंसल्टेटिव स्टेटस। देन कम्स एनएचआरसी इंडिया एक्रीडिएशन डिफर्ड अगेन। यूएन लिंक्ड बॉडी गनहरी deferred accreditation of India's National Human Rights Commission (NHRC) for a second year, citing concerns over appointment transparency, police involvement in probes, and diversity. Deferral could impact UN participation. India on US priority watch list पे। India remains on the US priority watch list for intellectual property protection and enforcement issues according to the 2024 special 301 report है। Concerns include इसमें piracy, trademark, backlogs and the trade secret protections। ठीक है, इसमें include है। Then comes India EFTA trade deal signed. India signed a trade and economic partnership agreement (TEPA) with EFTA countries Switzerland, Iceland, Norway and Liechtenstein। ठीक है, ये जो है EFTA का members है। Aiming for $100 billion FDI एंड 1 million जॉब ओवर 15 years। कवर्स गुड्स, इसमें क्या क्या चीज़ कवर्ड है? तो गुड्स कवर्ड है, सर्विसेज, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ग्रांट सिग्निफिकेंट मार्केट एक्सेस। देन कम्स कॉल टू रिन्यू US GSP। Analysts urge renewal of the US generalized system of preference GSP program, which grants reduced tariffs to developing countries to strengthen US-India trade ties। US GSP क्या है? तो expired on needs congressional action for renewal। Inter-Services Organization ISO Act notified, Defense Ministry notified the ISO Act 2023 enabling effective command, control and discipline within tri-services organizations under a single commander, facilitating jointness and theaterization। नेक्स्ट हम लोग का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS रोल। तो CDS हाईलाइटेड अग्निवीर्स पोटेंशियल। दी CDS पोस्ट करेंटली अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान थे। Integrates India's defense forces, advises government and can serve up to age of 65। Mandate includes promoting jointness and optimizing resources। प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च हुआ है। तो ये क्या है? तो इंडियन आर्मी एंड थिंक टैंक USI लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव टू रीडिस्कवर एंड इंटीग्रेट एंशिएंट इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स फ्रॉम वेदास, अर्थशास्त्र etc. into contemporary military practices, aims to bridge historical wisdom with modern needs। Clear? Then comes अपना BIMSTEC charter enters force। BIMSTEC grouping acquired legal personality as its first charter came into force, enabling structured diplomatic engagement, reinforces members' commitments to cooperation in the Bay of Bengal region। BIMSTEC का यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन मेंबर्स है। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। क्लियर? नेक्स्ट अपना देखिए मनामा डिक्लेरेशन ऑन पैलेस्टीन। तो अरब लीग कॉल्ड फॉर UN peacekeepers in occupied Palestinian territories until a two-state solution is achieved। As per the Manama declaration issued during Gaza conflict, also urged ceasefire, Palestinian unity and condemned Red Sea attacks। Then comes India chairs Colombo process। India assumed chairmanship of the Colombo process forum of 12 Asian migrant sending countries for 2024-26। Aims to share best practices on overseas employment, focusing on skills, ethical recruitment, remittances, etc. Then Russia's tactical nuclear drill। तो Russia conducted drills involving tactical nuclear weapons near Ukraine। Tactical nuclear weapons have shorter range, इसका short range रहता है, lower yield than strategic nukes, designed for battlefield use। इसको battlefield में use किया जाता है and are not covered by existing arms control treaties। Then comes International Organization for Migration IOM report। तो IOM reported a deadly shipwreck of Yemen, highlighting migrant risks। IOM established हुआ था 1951 में, UN affiliated है, works globally on ensuring orderly human migration, providing aim and tackling trafficking। New UNSC non-permanent members elected: Pakistan, Somalia, Denmark, Greece, Panama elected to UN Security Council for 2025-26 terms। Election by UNGA follows regional distribution, requires 2/3 majority।
Next comes WIPO Treaty on Genetic Resources finalized. Historic treaties concluded at WIPO mandates disclosure of origin for patents using genetic resources. ठीक है, genetic resources से इसको patent दिया जाएगा. Then using a genetic resources GR or associated traditional knowledge ATK aims to prevent misappropriation and benefit biodiversity rich nations like India. Fourth SETS conference, तो international conference held in Antigua and Barbuda, May 2024 में focused on sustainable development for small island developing states. Theme इसका क्या है? Charting the course toward resilient property. States face unique vulnerabilities recognized since 1992 Rio Summit में. साइबर वॉरफेयर डॉक्ट्रिन क्या है? ये तो इंडियाज फर्स्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन है ये फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन, एड्रेसेस साइबर वॉरफेयर विच पोसेस थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड डिफेंस. Especially given China's advancement, the doctrine guided the tri-services in planning and executing cyberspace operations, raising awareness among military personnel. Then comes अपना Tarang Shakti exercise 2024. India will host its largest international air exercise, Tarang Shakti, in 2 phases across Tamil Nadu and Rajasthan. It aims to strengthen strategic ties and enhance collaboration between the Indian Air Force and allied forces with 51 countries invited. Clear? Then comes अपना radiation biodosimetry advancement. The radiation biodosimetry field is rapidly advancing. Biodosimetry है क्या? तो एक measuring radiation exposure through biological samples is essential for radiological emergencies. Advancement include the premature chromosome condensation (PCC) assay and high throughput screening (HTS) platform, reducing assay time for quicker radiation dose evaluation and treatment. Then FATF mutual evaluation report. FATF recognized India's effort in mitigating MLTF, ठीक है, risk transitioning to a digital economy and implementing the JAM Trinity. India's performance enhances across to global finance markets, bolster investor confidence and amid global expansions of UPI. Then comes BRICS expansion. BRICS का expansion हुआ है कैसे? तो BRICS expanded to include Iran, UAE, Ethiopia, Saudi Arabia and Egypt. BRICS leaders reaffirmed multilateralism, discussed a common currency space cooperation and global challenges like COVID-19 and climate change. Okay, अब देखिए हम लोग आता है SCO summit. The Shanghai Cooperation Organization SCO Council of Head of Government meeting in Islamabad saw India underline terrorism, extremism and separatism as threat. India rejected China's Belt and Road Initiative (BRI), promoted its digital agenda including digital public infrastructure या DPI. ठीक है, अब आता है हम लोग का IMO काउंसिल सेशन. तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 132nd सेशन ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, रेजिंग द इश्यूज ऑफ सीफेयर अबैंडमेंट एंड प्रोपोजिंग द साउथ एशियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सेस स्मार्ट जो रहता है ना ये. Then comes अपना Project 76 submarine program. तो Indian Navy is in preliminary stage of Project 76, developing indigenous conventional diesel submarines with air dependent propulsion AIP. ठीक है, air independent propulsion इसमें रहेगा. इसका preliminary stage में हम लोग का इंडिया. The project aims for self reliance in submarine technology, seeking to replace the Sindhu Ghosh या Kilo class. Then comes INSTC transport corridor. Russia dispatched trains carrying coal to India via the International North-South Transport Corridor (INSTC) for the first time. INSTC aims to link the Indian Ocean and Persian Gulf to the Caspian Sea and Northern Europe, reducing transit time and freight cost. Then है अपना कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट CPA. इंडिया एंड US signed a cultural property agreement to combat illicit trafficking of Indian antiquities. The agreement restricts the importation of certain archaeological and ethnological materials into the US, aiding in the seizure and repatriation of Indian antiquities. Then exercise Nomadic Elephant. The 16th edition of India-Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant was conducted at Umroi, Meghalaya, focusing on counter-insurgency operations. एक्सरसाइज मैत्री ये क्या है? तो इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है. कंटिजेंट डिपार्टेड फ्रॉम द 13th एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, प्लान टू इनहांस मिलिट्री कोलैबोरेशन एंड इंप्रूव कोलैबोरेटिव स्किल्स इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस. देन अपना G4 nations on UNSC reforms. India representing the G4 nations emphasized the need for UNSC reforms to address global challenges like extremism and cybersecurity threats due to lack of representation and declining credibility. Then comes अपना India-Australia Maritime Security Dialogue. The 6th India-Australia Maritime Security Dialogue focused on maritime safety and promoting
ecological sustainability under the Indo-Pacific Ocean Initiative to ensure a safe and secure maritime environment. Maritime Rescue Coordination Center. India inaugurated the Indian Coast Guard's new Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) in Chennai to enhance maritime rescue operations, along with the Regional Marine Pollution Response Center (RMPRC) and Coast Guard Air Enclave (CGAE) in Puducherry. Sixth Quad Leaders Summit. The Quad leaders announced the Quad Wilmington Declaration, the Quad Cancer Moonshot Maritime Initiative for training in Indo-Pacific Maitri, a maritime legal dialogue, a maritime logistic network, a part infrastructure partnership, and semiconductor supply chain contingency network. Then comes अपना तापी pipeline project. तो Pakistan and Turkmenistan signed a joint implementation JIP to expedite progress on the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India तापी जो है ये gas pipeline project designed to transport 33 billion cubic metric of natural gas annually.